Hello students, welcome to the online mathematics classes. Today we will discuss chapter 13 of class 9, which is surface area and volume. Now first, plane figures. What are the plane figures? Plane figures are flat two-dimensional shape. Two-dimensional इसलिए क्योंकि only दो dimension given होंगे अपने को जैसे length width. A plane figure can be made of straight lines, curved lines and both straight and curved line. जैसे rectangle, square और circle. और अगर इजीली डेफिनेशन देखना चाहे तो हम किसी वो भी फिगर जो हम इजीली ड्रॉ कर सके नोटबुक या ब्लॉक बोर्ड पे क्या बोलते हैं उनको प्लेन फिगर्स. क्लियर. सॉलिड फिगर. सॉलिड फिगर आर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. दैट मींस विड्थ, डेप्थ और हाइट. उनकी तीन डायमेंशन होगी. उनको मेजरमेंट जो बताया जाएगा थ्री डायमेंशन से होगा, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब और स्फीयर. बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब. क्यूबॉइड किस टाइप की शेप है आपको दिख रहा है यहाँ पर, थ्री डायमेंशनल, जिसमें लेंथ, ब्रेथ बी और हाइट एच. ईच फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगल. ओके, एंड there are six faces in a cuboid. Therefore we have to find area of each face, and after finding the area we will add and we get the formula for surface area of cuboid, which is 2 into lb plus bh plus hl. So we use the direct formula, this formula, for find the surface area of a cuboid. If we exclude two faces, we have to find only area of only four faces, that is known as lateral surface area, whose formula is 2 into l plus b into h. Clear. Cuboid, surface area of a cube. Cube has six faces, which each face is a square of side A. Therefore, we have to find the area of all each faces, whose area is A square, side square, side square, side square. What we get? 6 into A square. The surface area of a cube, 6 into A square. Lateral surface area of a cube, 4 into A square. Excluding two faces, we use only four faces. Now, example, take an example or exercise book. Example 2. Hamid has built a cubical water tank with lead for his house, with each outer is 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding base. Base को छोड़ के बाकी जो surface उसका outer surface, उस पे वो क्या लगाना चाह रहा है, उसको square tile से cover करना चाह रहा है. और उस जो square tile है उसकी side कितना है, 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tile is rupees 360 per dozen. Now, since Hamid is getting the 5 outer faces of the tank covered with tiles, he would need to know the surface area of the tank to decide on the number of tiles required. अगर उससे number of tiles चाहिए तो first he have to find the surface area of the tank, and then he will divide the area of one tile, he get the number of tiles. So let age of the cubical tank 1.5 meter, we convert into 150 centimeter, multiply with 100, we get 150 centimeter. Let it is A. Now surface area of tank, 5 faces are excluding base, therefore 5 faces, 5 into A square, 5 into 150 into 150. Area of each square tile, side into side, 25 into 25 centimeter square. The number of tiles required, surface area of the tank upon area of each tile. Put the value 5 into 150 into 150 upon 25 into 25, we get 180. Now for the cost, what we have, cost of 1 dozen tiles, that means cost of 12 tiles is rupees 360. Therefore cost of one tile will be 360 upon 12. We divide by the number 12, we get the cost of one tile, which is rupees 30. Now the cost of 180 tiles, 180 into 30, rupees 5400. Now surface area of a right circular cylinder. First of all, राइट सर्कुलर सिलेंडर, अभी जो अपने क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा था उनमें सभी फेसेस एक जैसे थे. जैसे हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखा होगा आपने सिलेंड्रिकल जो शेप होती है, जैसे बेलन या कोई भी पिलर सिलेंड्रिकल, तो उसमें सर्कुलर पार्ट भी होता है और हाइट आपको देखा होगा. कर्व सरफेस एरिया और ऊपर वाले जो बेस और टॉप और बॉटम का पार्ट है वो सर्कुलर पार्ट होता है. तो इसके दो तरह के सरफेस एरिया होगा, एक कर्व सरफेस एरिया,
उसका फॉर्मूला 2πRh। कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स, अब देखो अगर हम आपके पास कोई रेक्टेंगल सीट है पेपर की और जिसकी लेंथ अगर L लें और हाइट H, विड्थ H सॉरी, और आप इसको टर्न करो इसकी स्मॉलर साइड से, तो आपको क्या मिलेगा, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो उस केस में जो उसका विड्थ होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट, और जो सर्कुलर बनेगा पार्ट वो क्या होगा, उसका लेंथ, वो कितना होगा, 2πr। तो लेंथ 2πr इंटू विड्थ h, we get curved surface area of the cylinder 2πrh. Now total surface or area of a cylinder. Now on top there is circular part and bottom is also circle, therefore total surface area of cylinder is 2πr square plus 2πrh. Now therefore 2πr square plus 2πrs, that means 2πr into h plus r or r plus h. Take an example. Savitri had to make a model of cylindrical kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface of the kaleidoscope. What would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter with a 3.5 centimeter radius? चार्ट पेपर से वो क्या बनाना चाह रही है, कैलाइडोस्कोप, जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, जिसकी लेंथ यानी कि उसकी हाइट कितनी हुई 25 सेंटीमीटर, और वो क्या चाह रही है, उसकी रेडियस 3.5। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, जो सीट उसको वो फोल्ड करेगी, तो उसके लिए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कैलाइडोस्कोप जो कि लेंथ है 25 centimeter, area of chart paper required, curved surface area of the kaleidoscope which is 2πRh. use pi as 22/7, जब तक कहा नहीं जाए हम 22/7 ही यूज करेंगे, अगर कहीं स्पेशल गिवन हो कि यूज 3.14 तो we will use 3.14. After multiplication what we get, 550 centimeters square. Therefore the required area of paper, chart paper, is 550 centimeters. Take an example from your exercise. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of the painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. Diameter given है, radius कितना होगा, half of diameter which is 50/2, 25 centimeter. We convert it into meter because height किसमें given है, मीटर में, unit same रखना है, तो ये हो गया 0.25 मीटर, हाइट 3.5 मीटर। कर्व सरफेस एरिया पेंट उसको कर्व सरफेस एरिया पे करना है, तो 2πRh, 2 into 22/7 into 0.25 into 3.5, we get 5.5 meter. Now what we have, cost of painting of 1 meter square is 12.50 rupees. Therefore cost of painting the curved surface of the pillar, multiply 5.5 to 12.50 rupees, 668.75. Surface area of a right circular cone. Curved surface area of the cone is 1/2 L into 2πr. Now what we have? We have a right circular cone where only one part is circular, height h, ये जो तिरछी लाइन जो दिखी है उसको क्या बोलते हैं, स्लंट हाइट, which is denoted by L. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, πRL, और टोटल सरफेस एरिया πRL प्लस एक और पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट सर्कुलर, πr स्क्वायर, πRL प्लस r. व्हाट इज L? L हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, L is equal to √r square plus h square. Take an example. The height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. Here given कितना है, pi, we use pi 3.14. In solution, what is given, height 16 centimeter, radius 12 centimeter. First we have to find L, which is with Pythagoras theorem, L square equal to h square plus r square. Therefore L equal to √16 square plus 12 square, which is 400. The square root of 400 is 20 centimeter. Slant height is 20 centimeter. Therefore curved surface area, what is the formula, πRL 3.14 into 12 into 20, 753.6 centimeter square is the curved surface area. Now for total surface area, πRL plus πr square,
5 we already calculate 753.6 plus 3.14 into 12 into 12. What we get? 753.6 plus 452.16. That is, we get the result. Now surface area of a sphere. स्फीयर का surface area जिसकी radius r है क्या होता है 4 into pi r square. Surface area of a hemisphere. Hemisphere का surface area ये वाला part जो है कितना है 2 pi r square. और अगर हम इसको भी जो कट वाला पार्ट है उसको भी ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर. उस केस में क्या होगा टोटल सरफेस एरिया. स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर. हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा. क्लियर. नाउ एग्जांपल 7 ऑफ योर बुक. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया फाइंड करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर 4 into 22.7 into 7 into 7 616 centimeter square. We simply use the formula of surface area of sphere. Now, example 10. A hemispherical dome of a building needs to be painted. किसी building का गुंबद hemispherical shape में है, उसको paint करना है. If the circumference of the base of the dome is 17.6, जो इसका base है, base कैसा होता है hemisphere का? Circular form. Circle का हमें circumference given है, उससे हम radius find कर सकते हैं. And find the cost of the painting. Given cost is, और painting कहाँ होगी? केवल upper part पे होगी. तो कौन सा एरिया हुआ हेमिस्फीयर का? curved surface area. Now since only the rounded surface of the dome is to be painted, we would need to find the curved surface area of the hemisphere to know the extent the painting that needs. What is given? Circumference of the dome 17.6. Therefore 17.6 is equal to 2 pi r. Therefore radius of dome 17.6 into 7 upon 2 into 22, 2.8 meter. Now curved surface of the dome, which is a hemisphere. What is the formula? 2 pi r square 2 into 22 upon 7 into 2.8 into 2.8. 49.28 meters square. Cost of painting 100 centimeters square rupees 5. Therefore cost of painting 1 meter square is 500 rupees. Multiply with 100. Therefore cost of painting the whole dome is rupees 500 into 49.28, 24,640. Clear. जो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? मीटर स्क्वायर. क्लियर. दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई विद 100. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. सरफेस एरिया क्लियर हो गया. क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंड्रिकल और कॉन और हेमिस्फीयर. अब आता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा. वॉल्यूम क्या है? जो 3D शेप जो होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. उस स्पेस को क्या कहते हैं? मेजरमेंट जो होता है वो वॉल्यूम होता है. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बेस एरिया इनटू हाइट. अब बेस एरिया जैसे देखो ये रेक्टेंगल प्लेट है. अगर इस तरह की खूब सारी प्लेट्स अपन लें तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम. तो बेस एरिया क्या होगा? एल इंटू बी और हाइट उसकी h. तो l इंटू बी इंटू एच, शॉर्ट में एल बी एच. तो क्यूबॉइड अगर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम उसके तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे. कई बार क्वेश्चन में उसका डायमेंशन इस फॉर्म में गिवन होता है 20 इंटू 25 इंटू 35. दैट मीन्स l इंटू बी इंटू एच. ओके. l लेंथ, b ब्रेथ, h हाइट. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. अब क्यूब का वॉल्यूम कितनी साइड्स हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल. एज इंटू एज इंटू एज, ए क्यूब. अगर साइड ए है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब. एग्जाम्पल 11. A wall of length 10 meter was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter. Okay. वॉल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, ओपन ग्राउंड पे बिल्ड करनी है. उसकी हाइट कितनी है? 4 मीटर और थिकनेस कितनी है? 24 सेंटीमीटर. ओके. तो तीन डायमेंशन दिख रहे हैं आपको, लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ. थिकनेस यानी उसकी मोटाई. इफ दिस वॉल इज टू बिल्ड अप विद ब्रिक्स whose dimensions are 24 into 12 into 8 centimeter, L into B into H, how many bricks? फिर वही जैसे हमने पहले के एग्जांपल में किया था.
क्यूबिकल टेंट बनाया था हामिद ने और उसमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी थी, तो सरफेस एरिया में डिवाइड किया था एक टाइल्स का एरिया। वैसे यहाँ पर हमें ब्रिक्स फाइंड करनी है, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम गिवन है, तो नंबर ऑफ bricks is equal to volume of the wall upon volume of one brick. Clear? So first, since the wall with all its bricks makes up the space occupied by it, we need to find the volume. क्योंकि एक एक करके ब्रिक्स पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा ऑक्यूपाइड प्लेस मिलेगा उस वॉल का, वो क्या होगा, वॉल्यूम। और किस शेप में है ये, क्यूबॉइड शेप। लेंथ 10 meter we convert into centimeter, 1000 centimeter thickness, 24 centimeter height, 4 meter, that means 400 centimeter. Therefore volume of the wall LBH 1000 into 24 into 400 centimeter cube. Now each brick is a cuboid whose length 24, breadth 12 and height 8 centimeter. Therefore volume of each brick is LBH 24 into 12 into 8 centimeter cube. Number of bricks required, volume of the wall upon volume of the each brick. 1000 into 24 into 400 upon 24 into 12 into 8. 4166.6, that means wall requires at least 4167 bricks. ओके, अब यहाँ देखो इसने मल्टीप्लाई करके रखा अपने, ठीक है, सॉल्व करके नहीं लिखा। क्यों? कि जब हमारे पास डिवाइड करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उसको कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल उसको उसी फॉर्म में रखो ताकि इजीली वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप्ड, डायग्राम दिख रहा है आपको। इफ each pillar has a circular base of radius 20 cm and height 10 cm, ये देखो पिलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी हाइट 10 cm और उसकी बेस जो सर्कुलर बेस की रेडियस 20 cm। हाउ मच concrete mixture would be required to build such pillar? तो solution, the concrete that is to be used, अब concrete से बनेगा तो वो space occupy कर रहा है, that means we have to find the volume. Okay, entire space of the occupy the entire space of the pillar, what we need, we have to find the volume. Now radius of the base cylinder 20 centimeter, height of the cylindric pillar 10 meter, convert into centimeter, what we get, 1000 centimeter. So volume, what is the formula? Pi r square h, 22 upon 7 into 20 into 20 into 1000. 88,000 single 0 upon 7. That means convert this into meter. So we have 8.8 upon 7. We multiply with 10 to the power, divide with 10 to the power 6. Clear? मीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर में 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब में कितना होगा, 100 into 100 into 100. क्लियर? नाउ वॉल्यूम ऑफ द 14 पिलर, हाउ मेनी पिलर्स आर, 14 पिलर्स, therefore multiply with volume of each cylinder into 14, 17.6 meter cube concrete required. Next, volume of a right circular cone 1 upon 3 pi r square h. Example, Monica has a piece of canvas whose area is 551 meters square. She uses it to have a conical tent made. Okay, base radius 7 meter. Assume that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amount to approximate 1 meter square. Find the volume of the tent that can be made with it. Okay, कितना बन सकता है इससे? So since the area of the canvas is 551 meter square, okay, तो lost in wastage 1 meter square stitching और cutting में, तो बचा कितना उसका अपने पास अवेलेबल टेंट कैनवास का, 551 minus 1, that means 550 meters square. Now the surface area of the tent is 550 meters square. Required base radius 7 meter.
that a tent has only a curved surface area. The floor is not covered by canvas. Clear? Therefore, curved surface of tent 550 meters square. That means pi RL is equal to 550. Putting the value of R and pi 22 upon 7, we get the slant height L is equal to 550 upon 22, 25 meter. Now, from this we can find H by the Pythagoras theorem. L square equal to R square plus H square. H is equal to under root L square minus R square, which is under root 25 square minus 7 square. This is to solution we get 24 meter height. Now volume of the conical tent 1 upon 3 pi r square h. Put the value of r, h and pi, we get 1232 meter cube. Clear? इस क्वेश्चन में हमें कैनवास का एरिया गिवन था. एरिया कौन सा था? क्योंकि टेंट बना रही है वो कॉनिकल शेप में, तो बेस में तो कैनवास यूज नहीं होगा, ओनली कहाँ होगा? उसके कर्व पे. तो कर्व सरफेस एरिया किसका लेंगे हम? कौन का. क्या फॉर्मूला है इसका? पाई आर एल. उससे हमारे पास एल आएगा, आर ऑलरेडी गिवन है. आर और एल से हम क्या निकालेंगे? एच. उसके बाद 1/3 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ कॉर्न. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 pi r cube and volume of a hemisphere is 2/3 pi r cube. Clear? स्फीयर के लिए 4/3 pi r cube और हेमिस्फीयर है तो जस्ट उसका हाफ, दैट मींस 2/3 pi r cube. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस to 11.2 centimeter. रेडियस गिवन है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम 4/3 pi r cube. पुट द वैल्यू ऑफ r and pi 22/7. We get the volume which is 5887.32 centimeter cube. क्लियर? एक एग्जांपल करते हैं हेमिस्फीयर के लिए भी. A hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of the water it would contain? Again, occupy क्या कर रहा है? यानी वॉल्यूम फाइंड करना है. गिवन है डायरेक्ट इसमें. तो वॉल्यूम किस में डालना है अपन? हेमिस्फेरिकल बाउल में. तो जो हेमिस्फेरिकल बाउल होगा उतने उसमें वॉल्यूम होगा वाटर का. Therefore, volume of the water, the bowl can contain 2/3 pi r cube. Volume of hemisphere 2/3 into 22/7. R 3.5 into 3.5 into 3.5, 89.8 centimeter cube. Thank you. Have a nice day.